Welcome to a new video. In previous video, we discussed about the characteristic feature of a living being. In this video, we will discuss about the taxonomy, systematics and the taxonomical hierarchy. So first, what is taxonomy? This term is given by the Candle, the scientist Candle. It is a branch of biology. It is a branch of biology which deals with identification, nomenclature and classification of an organism. Simple. If we identify, nomenclature and classify one organism, that whole process is called as a taxonomy. What is identification? Means I have to describe that organism. So suppose this is an organism, I have to describe it has 2 ears, the body color is this, the body has this kind of pattern, it has 4 legs, the legs have paws, the paws have suppose the nails, and it has 2 ears which is in standing position, or whatever the property I have listed about that organism, that is called as identification. Because if I have listed some kind of characters which is belong to this particular organism, and you want to identify that organism, how you will identify? You will identify the matching the characters which I have written, and you will observe, and by that comparison you can identify, oh, this is the organism which I read, or the name of that organism is this. By that process is called as identification. Okay, so that is the first step. The second step is the nomenclature. Nomenclature is the process by which we give that organisms a name, a particular scientific name. We will read about that, how a scientific name is given to an organism. So that process is called as nomenclature. And classification, we classify the organism in various categories. Those are called taxonomical categories. In various categories, we place that organism in specific category which is belong to that particular organism. So all three processes, the identification, the nomenclature and the classification of that organism is called as taxonomy. If we term the taxonomy, if we differentiate the taxonomy, they can be divided into 2 groups. The most important point here you can remember, the father of taxonomy. The father of taxonomy is no one but that is Carlos Linnaeus. Okay. The famous scientist Carlos Linnaeus is the father of taxonomy, and he gave the classical taxonomy. The taxonomy can be divided into 2 groups, that is, one is classical taxonomy, the classical taxonomy, and the second is the modern taxonomy. Modern taxonomy. And you remember, the classical taxonomy is given by the Carlos Linnaeus and the modern taxonomy is given by the Julian Huxley. Julian Huxley. Okay, he is the father of the modern taxonomy. Then what is classical taxonomy and what is modern taxonomy? See, classical taxonomy is all about, when you consider the classical taxonomy, the taxonomy is based on only the morphological characters, based on morphological characters. Okay, this is the classical taxonomy. And what about the modern taxonomy? The modern taxonomy is based on various means. It is based on the cytology. It is based on cytology. Cytology means
the structure of cell, the organelles present inside of that, how the cell is working, the biochemistry means about the biological reaction which is taking place inside of the cell, the structure of the biomolecule, the structure of the amino acid, the structure of the DNA, the structure of the proteins, carbohydrate, everything that is also a base of the taxonomy or classification. So that is called biochemistry. Maybe the physiology, the body's different function like digestion, respiration, circulation, excretion, these are the physiology of that body. Maybe the genetics based on the anatomy, anatomy means the tissue. Maybe the evolutionary relationship, etc. Most probably every single feature is considered in modern taxonomy, which is given by Julian Huxley. Okay, clear? So this is all about the differentiation of the taxonomy. One is classical, which is purely based on the morphological character. Morphological character means the observable character. जोटा मु बाहर देखी कि कहि परिबी से organism विषय तार एतिकिटा गोड़, एतिकिटा कान, एतिकिटा आखि, तार बॉडी कलर एई भलिया, तार बॉडी रो शेप एई भलिया पैटर्न अछि, तार बॉडी रो आखि रो कलर एमतिया. All this structure I can say by simple observation that those are the morphological characters. And for the modern taxonomy, I have to go the cellular level, I have to go to the micro level, I have to go to the DNA level even. So those all characters based on the modern taxonomy. Clear? Then we will discuss about the levels of taxonomy. When you do the taxonomy, you have to perform 3 levels. What are those? The level of taxonomy are of 3 types. One is alpha taxonomy, one is beta taxonomy, another is gamma taxonomy. What is alpha taxonomy? Here you only identify and nomenclature of that organism. So here only identification and nomenclature of that organism. So एठी केवल एई दुटा स्टेप जदी तमे करूचो, that is the first level, that is alpha taxonomy. बीटा taxonomy रे कोन करिवो, तमे क्लासिफिकेशन करिवो. ताकू क्लासिफिकेशन करिवो माने that means तमे ताकू को कैटेगरी रे रखिबो, हायर कैटेगरी रे कोठी रखिबो, लोअर कैटेगरी रे कोठी रखिबो, सेटा जेतबेले डिसाइड हबो ताकू कहा जिवो बीटा taxonomy. Gamma taxonomy रे you will add the evolutionary relationship. The evolutionary relationship, then it can called as gamma taxonomy. Clear? Bujhela? So this is all about the taxonomy. We read the definition of the taxonomy, the types of taxonomy, that is classical and modern taxonomy. We read about the level of taxonomy, that is alpha, beta and gamma taxonomy. Second part hochi kono na systematics. This is the first thing. Then second thing asila kono systematics. What is systematics? Systematics is given by the word which is used by Carolus Linnaeus. In his book Systema Naturae. First time पाई ए बुक रे से प्रथमे गोटे टर्म यूज कले, दैट इज सिस्टमैटिक्स. एंड सिस्टमैटिक्स कोन किछि कष्ट नुह पिले. सिस्टमैटिक्स इज नथिंग बट द taxonomy with phylogenetic relationship. Okay, and you know the phylogenetic relationship nothing but the evolutionary significance or the evolutionary relationship. The phylogenetic relationship can be called as the evolutionary relationship. तामने systematics कहिले आमे identification, nomenclature,
क्लासिफिकेशन सहित जेतबेले तमे तार इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को भी स्टडी करिवो तार कंपैरेटिव स्टडी करिवो जे को ऑर्गेनिज्म सहित तार सिमिलरिटी अछि आर एंसेस्टर किए एई सब जिंस गुडा को जेतबेले तमे कंसीडर करि देबो यू कॉल दैट एज अ सिस्टमैटिक जनरली आमे सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी को गोटे सिनोनिम रूपे यूज करू बट इट इज द एक्चुअली दीज आर नॉट सिनोनिम्स देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिकॉज़ टैक्सोनॉमी कहले आमे केवल आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को बुझेला बेले जेतबेले तमे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करि देबो दैट इज होल एज कॉल्ड एज ए सिस्टमैटिक्स बुझेला क्लियर ये गला सेकंड थिंग थर्ड थिंग मु तुमको कहितली वी विल डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज taxonomic categories. What is taxonomic categories? The taxonomic categories कहले आग भूली जाओ taxonomy को categories कहले हमें बुझुचे these are the level or rank. What are level or rank? Level कहले हमें कौन बुझे suppose मु consider करीबी CBSE अंडर रे अछंती 100 schools 100 स्कूल्स रु मते जिबार अछि एक्स बोली गोटे स्कूल अछि एक्स स्कूल रे डिफरेंट क्लासेस अछि से क्लासेस रु मते जिबार अछि क्लास 11 को क्लास 11 रे गुडाए सेक्शन अछि से सेक्शन भितरु मते जिबार अछि सेक्शन बी को सेक्शन बी भितर एंट्री कले गोटे रो रे बॉयज बसथिबे गोटे रो रे गर्ल्स बसिथिबे मते जिबार अछि बॉयज रो नंबर 3 को दैट मींस सीबीएसई सबुठो हाईएस्ट कैटेगरी से कैटेगरी गुडाए स्कूल रहिले सेटा ताठू लोएस्ट कैटेगरी आसला गोटे लेवल आसिला से लेवल भितर गुडाए सपोज गोटे को पर्टिकुलर स्कूल को मु गला परे ता भितर गुडाए क्लास प्रेजेंट अछि तो से सब जाक क्लास जेतबेले को जाउची से गोटे लेवल आसिले ता तळ लेवल क्लास भितर सेक्शन अछि से सेक्शन ता तळ लेवल आसिले सेक्शन भितर जे रो अछि सेटा आहुरी तळ लेवल आसिले रो थर्ड रो सेटा सबुटो स्पेसिफिक रो को मु पळे आसिली गोटे स्पेसिफिक पिला पाख को मु पळेबी सो दीज आर द लेवल्स ठीक सेमती जेतबेले हमें गोटे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करिबा आमे भी एमती लेवल देई के जिबा कंसीडर कर जेतबेले मु खाली सीबीएसई कहले ऑल ओवर इंडिया रो एवरी पिला कंसीडर है कि पळेले ने केते डाइवर्सिफाई ग्रुप सेटा हे गला बट जेतबेले मु एक्स स्कूल रो क्लास 11 रो सेक्शन बी रो से जो थर्ड रो रो फर्स्ट पिला पाखु को जिबी सेई पिला पाखरे केते जिंस सिमिलारिटी थिबो ना सेई पिला से रूम रे बसिथिबा प्रत्येक पिला सहित क्लास रे समान दे ऑल रीड इन द क्लास 11 मु कहि देई पारिली मु एकता कहि देई पारिली जे से समस्ते सेक्शन बी रो पिला मु कहि देई पारिली से समस्ते एक्स रे पढंती स्कूल एक्स रे पढंती आ मु कहि देई पारिली जे से समस्ते सीबीएसई अंडर रे पढंती सो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आई कैन से बिकॉज ऑफ दिस लेवल मु जेहेतु गोटे परे गोटे लेवल देई की गली सेति पई मु जाई पहुंची परिली गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे आ सेइटी ठिया है कि मु ऑल दिस कैरेक्टर से सबु पिला मानक पई कहि देई पारली नो डाउट से सबु पिला मानकर इंडिविजुअलिटी भी अछि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी अछि बट ऑल दिस कैरेक्टर्स व्हिच आई हैव सेड यू those are common to every student which are sitting in that particular classroom बुझेला सो these are the need for the classification आमे तळे पढिबा जे what are the need for classification this is the one of the need for classification जे आमे गोटे पिला को पाखरे पहुंची की पूरा से होल क्लास विषय गुडाए पॉइंट्स कहि दे परिबा सो ऑल these levels are called as categories and जेतबेले आमे टैक्सोनॉमी रे एम्ति लेवल को कंसीडर करूचे ताको मे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बोली कहूचे फर्स्ट पिले लिनियस गुडाए कैटेगरी देइथिले देन तापर आमे ताको मॉडिफाई करके गोटे फाइनल लिस्ट ऑफ कैटेगरीज बनैछे आमे आइदर असेंडिंग रो डिसेंडिंग जाई परिबा और डिसेंडिंग रो असेंडिंग जाई परिबा सपोज मु आरंभ करूची लेट्स से ट्राई फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज किंगडम देन फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस and the species. This is the highest category and this is the lowest category. जेतबेले हमें kingdom कहूचे हमें इटी मेंशन करि परिबा this is the highest and most diversify category.
But what about the species? This is the lowest and commonly related organism. तो स्पीसीज रे डाइवर्सिटी कम मिलिबो बिकॉज एटी जो ऑर्गेनिज्म माने थिबे दे आर वेरी कॉमनली रिलेटेड हेकी थिबे, वेरी क्लोज रिलेटेड हेकी थिबे. सो हियर द डाइवर्सिटी इज वेरी लो. इन किंगडम द डाइवर्सिटी इज वेरी हाई. इफ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम देन गोटे किंगडम भितरे गुडाए फाइलम अछंती, गोटे फाइलम भितरे गोटे गुडाए क्लास अछि, गोटे क्लास भितरे गुडाए ऑर्डर अछंती, गोटे ऑर्डर भितरे गुडाए फैमिली, गोटे फैमिली भितरे गुडाए जीनस और गोटे जीनस भितरे गुडाए स्पीसीज. इफ आई गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप गुडाए स्पीसीज को नहीं कि गोटे जीनस तैयारी होला, गुडाए जीनस को नहीं गोटे फैमिली, गुडाए फैमिली को नहीं गोटे ऑर्डर तैयारी हिची, गोटे ऑर्डर को नहीं गोटे क्लास, गुडाए क्लास को नहीं गोटे फाइलम, गुडाए फाइलम को नहीं कि गोटे किंगडम. गोटे कथा मन रखिबो when we classify the plant species then तमे एटी फाइलम टर्म यूज न करिकी डिविजन टर्म यूज करिवो. बुझियला? इन बॉटनी देयर इज नथिंग ए टर्म लाइक फाइलम, वी यूज द डिविजन. सेम कैटेगरी सेम लेवल रो किंतु गोटे जूलॉजी रे हमें एनिमल्स मानन केस रे फाइलम कहउचे आ प्लांट्स मानन को केस रे हमें डिविजन बोली कहउचे. सो दीज आर द टैक्सोनॉमी कैटेगरीज. तो ई वीडियो रे हमें टैक्सोनॉमी कोन पढिले, हमें सिस्टमैटिक्स पढिले, हमें टैक्सोनॉमी रा क्लासिफिकेशन देखिले, लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी देखिले, ता सहित द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज देखिले. एटी गोटे टर्म ऐड कर दिए द अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन ए टॉप टू बॉटम और ए bottom to top manner is called as the taxonomical hierarchy. The taxonomical hierarchy. What is hierarchy? Hierarchy means a arrangement. आमे either ताकु top रू bottom को arrange करिबा और bottom रू top को arrange करिबा. से arrangement को आमे कहूचे taxonomical hierarchy. Okay? So in next video we will discuss about the identification and nomenclature of that organism. That is the first step of the taxonomy. Thank you.